So good morning, good afternoon, good evening, guys. So till now we had seen about the whole chapter that is rotational dynamics, and today we are going to start with some few problems based on MHT-CET examination. तो आज हमने इंटरफेस चेंज कर दिया है. Instead of board, we are trying to have something on screen. It becomes more easier to do on the screen. तो चलिए आज का जो सेशन है वो शुरू करते हैं. So we are having our first question on our screen, that is about the moment of inertia. So क्वेश्चन के साथ साथ हम कुछ बेसिक कंसेप्ट है वो भी हम रिवाइज करते जाएंगे. So your basics will get strong as well according to it. Now moment of inertia की अगर बात आई, we know that moment of inertia is equal to summation of mi ri square, right? Now the question is, moment of inertia of a disk about an axis which is tangent and parallel to its plane is I. Then the moment of inertia of a disk about a tangent but perpendicular to its plane will be. अब पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि अलग अलग एक्सिस के अलॉन्ग अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है डिस्क का. तो डिस्क का अगर बेसिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा जाए, इट विल बी along, that is passing through center of the plane and perpendicular to it. So it is mr square by 2. अभी यहाँ क्या बोला है, which is tangent and parallel to its plane. तो यहाँ पे हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा, दैट इज IO इज इक्वल्स टू IC plus MH square. We know that. Now B, which is tangent. तो tangent अगर हम डिस्क देखें तो डिस्क इज लाइक दिस, राइट? अभी उन्होंने क्या बोला है, the axis is passing through like this and which is parallel to the plane. So along the diameter moment of inertia हमें पता है, that is mr square by 4, or so we will write here as mr square by 4 plus यहाँ का है डिस्टेंस m और मास है m एंड डिस्टेंस है r, तो mr स्क्वायर. तो इसका फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, दैट इज 5/4 mr स्क्वायर, राइट? ये तो आ गया, दैट इज along the axis which is tangent and parallel to its plane. ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया 5/4 mr स्क्वायर. नाउ हमें क्या चाहिए, then the moment of inertia of a disk about a tangent but perpendicular to its plane. परपेंडिकुलर का सवाल आया तो हमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा, दैट इज I z इज इक्वल टू IX plus IY. हमने ये सब डिस्कस किया हुआ है हमारे प्रीवियस वीडियोस में. इफ यू didn't know about this, then you can access our whole playlist. हमारी प्लेलिस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल है अभी, IX plus IY. नाउ we know that IX हमने फाइंड किया है, that is 5/4 mr square plus perpendicular to its plane बोला है, तो फिर से along the diameter आएगा, that is mr square by 4 आ जाएगा, mr square by 4. So 5 plus 1 6/4 mr square. अभी ये जो थी IO is equal to 5/4 mr square and here IZ is equal to 6/4 mr square. हमारा फाइनल आंसर ये आ गया. पर आप बोलोगे ये आंसर तो कोई दिख नहीं रहा ऑप्शन में. तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू, ये आंसर जो है ये हमें I के फॉर्म में लाना है, तो हमें mr स्क्वायर को एडिट करना पड़ेगा. mr स्क्वायर को हम कैसे एडिट करेंगे, दैट इज यहाँ से हम mr स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. So it will be 4 I naught upon 5 is equals to mr square IZ. So IZ is equals to 6/4 mr square की वैल्यू का है into 4/5 I naught. 4 4 cancel,
that is 6 by 5 r. Answer is there. This is the answer. That is the answer. Right? Understand? ये बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन के तरफ. Two circular discs A and B have equal masses and uniform thickness, but have densities rho 1 and rho 2, such that rho 1 is greater than rho 2. The moment of inertia is. अभी यहाँ पे ध्यान रखिए कि टू सर्कुलर डिस्क दिए एंड इक्वल मासेस की दिए. तो पहले तो ये कंडीशन हमें आ जानी चाहिए कि m1 is equals to m2, right? Let me change the pen. Black लेते हैं. Now m1 is equals to m2. You know that. अभी डेंसिटी का सवाल आया यहाँ पे. डेंसिटी वी नो दैट मास अपॉन वॉल्यूम. लेकिन 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 अभी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कि जो डिस्क है, डिस्क तो टू डायमेंशनल है. अभी यहाँ पे हमने मास अपॉन वॉल्यूम लिया है, तो वॉल्यूम तो थ्री डायमेंशन का होता है, थ्री डायमेंशनल शेप का. वॉल्यूम तो हम ले ही नहीं सकते यहाँ पे. सो व्हाट वी हैव टू अज्यूम, वी हैव टू अज्यूम हियर द एरियल डेंसिटी दैट इज मास अपॉन एरिया फॉर टू डायमेंशनल शेप्स, दैट इज फॉर डिस्क. तो ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट वी हैव टू अज्यूम एरियल डेंसिटी. तो मास की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, दैट इज रो इनटू ए, राइट. सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मास क्या m1 is equals to m2, so we can write rho 1 a1 is equals to rho 2 a2, right? क्योंकि रो एंड ए आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, so we can write rho 1 a1 is equal to rho 2 a2. now रो 1 को थोड़ा साइड में रखते हैं. a1 अपनी सर्कल, डिस्क तो एक सर्कुलर फॉर्म में होती है, तो उसका एरिया क्या आएगा? we know that circle area of circle that is pi r square. Pi constant and r is not constant, so we had taken here as r1 and rho 2 the same as it is. The area of A2 will be pi r2 square, right? Pi will get cancelled. So rho 1 r1 square is equals to rho 2 r2 square. यहाँ से हमें r1 square upon r2 square की वैल्यू क्या मिल जाती है? That is rho 2 upon rho 1, right? Now we know that moment of inertia of a disk is given by mr square by 2. So if we relate moment of inertia and radius, so we know that I is directly proportional to r square. So we can write I1 upon I2 is equals to R1 upon R2 the whole square, right? अब ये एक्सप्रेशन हमें मिल गया एंड ये एक एक्सप्रेशन हमें मिल गया. अभी R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर वैल्यू तो है हमारे पास, दैट इज रो 1 अपॉन रो 2. सो हम पुट कर देंगे रो 2 अपॉन रो 1 इज इक्वल्स टू I1 अपॉन I2. तो यहाँ से हमें क्या समझ में आता है कि I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू रो 2 अपॉन सॉरी रो 1, राइट. डायरेक्टली हमें क्लियरली समझ में आता है कि I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो. तो यहाँ पे क्या दिया है कंडीशन, व्हाट इट इज गिवन कि अगर रो 1 इज ग्रेटर देन रो 2 तो इसका इनवर्स क्या आ जाएगा, क्योंकि ये तो इनवर्स प्रोपोर्शन में है, तो इसका इनवर्स क्या आ जाएगा? I1 इज लेस देन I2. अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता सच दैट I1 सॉरी I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, तो ये कंडीशन और ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है. लेकिन ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है, दैट इज व्हाई I1 इज लेस देन I2. अंडरस्टैंड? तो सी विल बी आवर आंसर. लेट मी चेंज द पेन. चेंज करने में मजा आता है यार. अलग अलग ड्राइंग्स अलग अलग कलर से लिखेंगे. छोटा स्काई. एंगुलर मोमेंटम, ये तो बहुत बेसिक सा सवाल है. एंगुलर मोमेंटम इज एक्सियल वेक्टर डी ने पढ़ाया हुआ, एंड एंगुलर वेलोसिटी सॉरी एंगुलर मोमेंटम ये आपको याद करके जाना होगा. एंगुलर मोमेंटम इज एन एक्सियल वेक्टर, राइट. व्हाट इज व्हिच इज द रॉन्ग रिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग? रॉन्ग रिलेशन आप बेसिक्स से फाइंड कर सकते हैं. टाउ टाउ का फॉर्मूला हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में. टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा
Then F is equals to ma according to Newton's second law of motion. L is equals to I omega भी पढ़ा था. That is expression for angular momentum. तो यहाँ पे ये रॉन्ग आ जा रहा है, दैट इज डी, क्योंकि फर्स्ट में ही देखो टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा है और डी में दिया है दैट इज आई इज इक्वल टू टाउ अल्फा. तो जो राइट रिलेशन है दैट इज टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा रहना चाहिए. दिस इज द रॉन्ग रिलेशन. डी विल बी योर आंसर. A dancer on ice spins faster when she folds her arm. This is due to. Now we know that a dancer on ice spins faster when she folds her arm. So when the dancer, हमने एक बैलेट डांसर का एग्जांपल पढ़ा था अपने प्रीवियस लेक्चर में. तो मैंने बताया था कि जब डांसर फोल्ड करती है अपने आर्म्स, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डांसर इंक्रीजेस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीजेस. अंडरस्टैंड? मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीजेस एंड एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेस. दैट इज व्हाई अभी अगर हम यहाँ देखें तो काइनेटिक एनर्जी ओवरऑल बढ़ जाएगी. दैट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. अभी आप बोलोगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन जो एंगुलर वेलोसिटी है उसका स्क्वायर है, तो वो तो और दो गुना बढ़ जाएगी. दैट इज डबल्ड. दैट इज व्हाई ओवरऑल जो काइनेटिक एनर्जी है इट विल बी इंक्रीज्ड. क्यों? बिकॉज ओमेगा का स्क्वायर है, तो ओमेगा डबल से बढ़ेगी, लेकिन जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो एक ही फैक्टर से कम होगा. मोमेंट ऑफ सॉरी एंगुलर वेलोसिटी विल इंक्रीज बाय डबल. That is why overall kinetic energy बढ़ जाएगी. That is why C will be our answer. That is constant angular momentum and increase in the kinetic energy. Kinetic energy overall बढ़ जाएगी हमारे डांसर की. अब ये अच्छा सवाल है. That is equal torques of equal magnitude are applied to a hollow cylinder and a solid sphere, both having the same masses and radius. Both of them are free to rotate about their axis of symmetry. If alpha c and alpha s are the angular acceleration of cylinder and sphere respectively, then the ratio of alpha c upon alpha s is. अभी हमने एक बेसिक सा फॉर्मूला पढ़ा था टॉर्क का, दैट इज टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, राइट. अभी हमें यहाँ पे पूछा है अभी टॉर्क ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, टॉर्क जो इक्वली अप्लाई किया है दैट इज व्हाट टॉर्क इज कांस्टेंट. सो वी कैन राइट आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अल्फा, क्योंकि अल्फा यहाँ पे चला जाएगा. Torque constant है. Torque will be treated as constant because of equal magnitude. Here it is given. So torque is inversely proportional to alpha. So we can write I1 alpha 1 is equal to I2 alpha 2. इसका हम लिख सकते हैं. अभी यहाँ पे दो शेप्स की बात की गई है. That is first one cylinder and second one is sphere. So हम I1 alpha 1 की जगह हम लिख सकते हैं IC alpha C, क्योंकि सिलेंडर के लिए, and the second one is solid sphere के लिए. अंडरस्टैंड? अभी सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा along passing through center and perpendicular towards plane. We know that जो रिंग का होता है वो सिलेंडर का होता है, that is mr square. and is का तो हमने पढ़ ही रखा है, that is solid sphere passing along the diameter 2 by 5 mr square, right. अभी यहाँ पे हमने एक कंडीशन दी है, that is सेम मास एंड रेडियस. सेम मास एंड रेडियस, तो हमें मास एंड रेडियस को चेंज नहीं करना है. we will put the value of IC and IS, that is mr square into alpha c is equal to IS 2 by 5 mr square into alpha s. mr square will get cancelled. हमें पूछा क्या है, अल्फा सी अपॉन अल्फा एस का रेशियो पूछा है. सो अल्फा एस वी विल शिफ्ट इट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. बचा क्या 2 by 5. दिस इज आवर आंसर, दैट इज बी आंसर. अंडरस्टैंड? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. A particle of mass m is moving with a constant velocity along a line parallel to the positive direction of the x-axis. The magnitude of its angular momentum with respect to the origin is.
अभी यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी दी है एंड एंगुलर मोमेंटम पूछा है. सो वी नो दैट एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आई ओमेगा, राइट. अभी अगर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी उन्होंने दी है, तो एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन वो भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है. एंगुलर वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होगी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट. एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा. अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी ऑल डायरेक्शंस में, then the magnitude of angular momentum will also be constant in all the directions. Understand? D will be our answer. That is remains constant for all positions of particle. मजा आ रहा है सर? हमें तो बहुत मजा आ रहा है. So let's move to our next question. That is, two bodies have the moment of inertia I and 2I respectively about their axis of rotation. If their kinetic energy of rotation are equal, their angular momenta will be in the ratio. अभी आप क्या करें इसमें? पहले जब सवाल आता है तब उसके गिवन एक माइंड में फिट कर ले अपने. लिखने का तो इतना टाइम नहीं मिलता सीधे में, क्योंकि अप्रोक्स यू गेट 40 सेकेंड्स फॉर वन क्वेश्चन. सो गिवन का लिखने का इतना टाइम नहीं होता. सो वट एवर द गिवन इज देयर इन द क्वेश्चन, यू हैव टू सिंक्रोनाइज इट इन योर माइंड. मीन्स आपको माइंड में फिट करके रखना है कि गिवन क्या रखा है, दे क्या रखा है क्वेश्चन में. तो चलिए करते हैं सॉल्व. मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एंड टू आई रिस्पेक्टिवली. एक अननोन बॉडी है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है आई एंड टू आई रिस्पेक्टिवली अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन. काइनेटिक एनर्जी इक्वल है. सो काइनेटिक एनर्जी वी नो द काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. If their kinetic energy of rotations are equal, then angular momenta will be in the ratio. अभी एक फॉर्मूला आता है कि एंगुलर मोमेंटा पूछा है, तो काइनेटिक एनर्जी और एंगुलर मोमेंटा का कुछ रिलेशन है ही नहीं, तो हम रिलेशन निकाल सकते हैं. एंगुलर मोमेंटा का फॉर्मूला क्या है? एल इज इक्वल टू आई ओमेगा. ओमेगा हम यहाँ से निकाल लेते हैं, दैट इज एल अपॉन आई, राइट. ओमेगा की वैल्यू हम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, एल अपॉन आई द होल स्क्वायर. दैट विल बी आई into L square upon I square. It will be L square upon 2I. This is our basic formula. ये आपको याद रखना है, क्योंकि हर बार आप डिराइव तो नहीं कर सकते, डायरेक्टली आपको ये याद करके जाना है. दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू L square upon 2I भी होता है. तो उन्होंने देख क्या रखा है क्वेश्चन में, काइनेटिक एनर्जी आर इक्वल. सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल होने की वजह से इट विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट. सो L square विल बी डायरेक्टली इक्वल टू I. हम ये लिख सकते हैं. व्हाई? Because kinetic energy is constant. So L square is directly proportional to moment of inertia. अभी हम ऐसे लिख सकते हैं L1 square upon L2 square is equal to I1 upon I2, राइट. उन्होंने पूछा क्या है? एंगुलर मोमेंटा का रेशियो पूछा है, मींस दिस वन. सो I1, तो फर्स्ट I1, what is the value of I1? That is I. And what is the value of I2? That is 2I. I will get cancelled, 1 upon 2. अभी यहाँ पे इसका स्क्वायर है, so L1 upon L2 will be under root 1 upon 2, that is 1 upon root 2. D is our answer. ये आईआईटी का सवाल है, तो बच्चे ये लास्ट में करेंगे हम एट द एंड ऑफ द वीडियो. इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू डू. जितने भी सम्स में ले रहा हूँ रोटेशन डायनामिक्स से, दीज ऑल आर द पीवाईक्यूज ऑफ एमएचटी-सीईटी. ये मैंने सैंपल क्वेश्चंस नहीं लिए हैं. दीज आर ऑल द पीवाईक्यूज दैट आई एम सॉल्विंग नाउ. नेक्स्ट क्वेश्चन. A wheel having a moment of inertia of 2 kg meter square about its vertical axis is rotating at a rate of 60 rpm.
about the axis. What is the retarding torque required to stop its rotation 1 minute? हमने एक बेसिक फॉर्मूला पढ़ रखा था, टाउ इज इक्वल टू आर अल्फा। अभी यहाँ पे अल्फा की अगर बात की जाए, सो इट इज टी ओमेगा बाय डी टी, दैट इज चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी with respect to time. So we can write omega minus omega naught upon t, right? So ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे I into omega minus omega naught upon t. What is the value of I? That is 2. ओमेगा की वैल्यू क्या है? What is the value of omega? That is rotating at the rate of 60 rpm. What is the retarding torque? Torque फाइंड करना है, हमें टाइम दे रखा है, दैट इज 1 मिनट का, 60 सेकंड्स। एंड ओमेगा क्या होता है? दैट इज 2 पाई अपॉन टी। सो 2 पाई अपॉन व्हाट इट इज, टी की वैल्यू क्या है? 60 है। सो इट विल बी पाई बाय 30। सो आई थिंक दैट कुछ तो गलत हो रहा है। वेट वेट वेट, वेट बच्चों, कुछ तो गड़बड़ हो रही है इसमें। टाउ इज इक्वल टू आर अल्फा था हमारे पास, अल्फा की वैल्यू थी ओमेगा बाय टी। सो आई की वैल्यू है 2, ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई बाय टी, दैट इज 4 पाई बाय टी। सो 4 पाई बाय टी की वैल्यू है 60 सेकंड, दैट इज 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स। और हाँ, वेट वेट वेट, अब देखिए यहाँ पे, सो हमने पहले बराबर किया था, थोड़ा कंफ्यूज हुआ था। सो टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन टी, राइट। आई की वैल्यू है 2, ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू क्या है? 2 पाई अपॉन टी, राइट। और ओमेगा नॉट तो रेस्ट पोजीशन में, इसलिए इट विल बी ट्रीटेड एज 0 इनटू, और ये डिनोमिनेटर का टी, दैट इज 1 अपॉन टी। नाउ 2 into 2 4 into pi upon t into 1 by t. What is 1 by t? That is n. अब यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है, दैट इज 60 आरपीएम। सो 60 आरपीएम इज इक्वल टू 1 आरपीएस, राइट। अगर हम इसे 60 से डिवाइड करते हैं तो हमें आरपीएस की वैल्यू मिल जाती है। तो एन की वैल्यू क्या होगी? 1 आरपीएस होगी। सो 4 इंटू पाई अपॉन टी की वैल्यू क्या है? दैट इज 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन? दैट इज 1 आरपीएस। So 4 pi upon 60 is equals to pi upon 15. Understand? So this will be our final answer, that is pi upon 15. The answer is B. Understand? आप फिर से यहाँ पे समझ लीजिए हमने क्या किया। tau is equal to alpha, the basic formula. Alpha हमें पता है, that is rate of change of angular velocity with respect to time. So omega minus omega naught upon t. We had placed the value of alpha in tau is equal to I alpha. So omega naught तो जीरो हो जाएगा, that is it is starting from the rest position, that is why omega naught हम स्टार्टिंग से जीरो कंसिडर करते हैं। एंड ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई अपॉन टी, एंड डिनोमिनेटर का टी यह हमने स्पेसिफाई किया है। सो 1 अपॉन टी क्या हो जाता है? दैट इज एन। सो एन की वैल्यू में दे रखी है, दैट इज 60 आरपीएम।
अगर हम उसे आरपीएस में कन्वर्ट करें, इट विल बी 1 आरपीएस. सो 1 आरपीएस हमने पुट कर दी. We had put all the values and the final answer is 5/15. Understand? The next question is, a body of moment of inertia 5 kg meter square rotating with an angular velocity of 6 radian per second has the same kinetic energy as the mass of 20 kg moving with the velocity of. यहाँ पे ध्यान दीजिए, यात्रियां कृपया ध्यान दीजिए. गाड़ी नंबर 1, 2, 4, 5, 6 प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है. टों टों. मजा आया? मजा आया कि नहीं? कमेंट बॉक्स में लिखो यार. So which pen should I choose? Let's have a 11. Right. थोड़ी पेन की ग्रिप थिकनेस कम कर देते हैं ना. So body of moment of inertia 5 kg meter square. अब यहाँ पे उन्होंने सेम काइनेटिक एनर्जी देके रखे हैं. So we know that kinetic energy is half I omega square, right? So kinetic energy तो सेम है, इसलिए हम लिख सकते हैं I is inversely proportional to omega square, right? अभी उन्होंने वेलोसिटी पूछी है. ओके ओके. सो काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो इसका मतलब क्या कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ये दोनों उन्होंने सेम क्वेश्चन में स्पेसिफाई किए हैं. तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का तो यहाँ पे सवाल ही नहीं होता, लेकिन क्वेश्चन में आपको समझना होता है व्हाट इट इज. सो दिस इज द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की कुछ जरूरत नहीं है. एंड यू नो द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी that is half mv square, the basic one. Understand? अभी रोटेशनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने देख के रखा है, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया उन्होंने क्या देख के रखा है, हाफ आई इंटू 5 इंटू ओमेगा स्क्वायर, दैट इज 6. 6 का स्क्वायर 36, दैट इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. एंड व्हाट इज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ. उन्होंने मास क्या देखा रखा है, 20, एंड वी हैव टू फाइंड वी स्क्वायर. अभी रोटेशनल एंड ट्रांसलेशन सेम है, सो वी कैन राइट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी. यहाँ पे स्पेसिफाई किया उन्होंने हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, दैट इज व्हाई वी आर टेकिंग दिस. सो half into 5 into 36 is equals to half into 20 into v square. Half will get cancelled. 5 into 36 upon 20 is equal to v square. 5 4 जा and 4 9 जा. So v का square क्या आया हमारे पास, 9. v is equal to 3 meter per second. वैल्यू आ गई. A will be the correct option. समझ में आ रहा है? हमने ये सब चीजें हमारे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी है. If you didn't know, access our playlist for the whole rotational dynamics. 8 lectures है total Physicon channel पे. Search Physicon on YouTube. You will get the whole playlist. Now, the second question is ratio of rotational kinetic energy to rolling kinetic energy of a sphere is. Okay. अभी यहाँ पे हमें क्या पूछा है कि
रेशियो ऑफ रोलिंग काइनेटिक एनर्जी, हमने रोलिंग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था। तो पहले रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेते हैं। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, एंड rolling kinetic energy is, we know that, half mv square into 1 plus k square upon r square, ये हमने पढ़ा था। तो इन दोनों का उन्होंने रेशियो पूछा है फॉर अ स्फीयर। सो हम देख लेते हैं, दैट इज हाफ आई। अभी सॉलिड स्फीयर के लिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, दैट इज 2/5 mr स्क्वायर। तो यहाँ पे हम पुट कर लेंगे, दैट इज 2/5 mr स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू हमें पता है, v इज इक्वल टू r ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, v अपॉन r, राइट। सो ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर अपॉन हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस, अभी यहाँ पे k क्या है, यू नो दैट वेरी वेल। व्हाट इज k, रेडियस ऑफ गायरेशन। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दैट, r इज इक्वल टू m k स्क्वायर, राइट। r इज इक्वल टू m k स्क्वायर। अभी m, we know the value of I, that is 2/5 mr square, so mm will get cancelled, and k का स्क्वायर आ रहा है, k का स्क्वायर, अभी हमने k का स्क्वायर क्या मिल गया, that is 2/5 mr square। so k स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, we will put the value of k square in this equation, that is 2/5 m, sorry, m नहीं आएगा, so 2/5 r square upon r square, r square will get cancelled, half mv square and half mv square will get cancelled, understand, r square will cancel। so बचा क्या है यहाँ पे, 2/5 बचा, 2/5 बचा, yes, and upon 1 plus 5/2, 1 plus 5/2, 2/5 क्या आ जाएगा, 7/5, so 7/5, 5/5 will get cancelled, what will remain, 2/7, 2/7 is the answer। so now what is the next question। so आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि क्वेश्चन के साथ साथ हमारी जो बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक जो फॉर्मूलाज है, हमने जो लेक्चर्स के टाइमिंग में पढ़े थे, वो रिवाइज हो रहे हैं सब। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो सब मतलब बेसिक्स का सवाल है बहुत। A thin uniform ring of mass m and radius r passing through its center and perpendicular to its plane, then its moment of inertia। thin uniform ring बोला है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, दैट इज पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, m r स्क्वायर होता है, m r स्क्वायर। देन along a tangent क्या होता है, along a tangent perpendicular to plane, that is 3/2 m r स्क्वायर होता है, राइट। along a diameter, along a diameter will be 2 m r स्क्वायर। तो ये सब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है along various axes, ये आपको याद रखने होते हैं। वो आंसर इज m r स्क्वायर। Second one is moment of inertia of a thin uniform circular ring about the tangent to the plane of the ring is। अभी यहाँ पे क्या पूछा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग का ही पूछा है, अबाउट द tangent to the plane। tangent to the plane मैंने अभी बताया, सॉरी, तो मैंने परपेंडिकुलर यूज किया था, ये means actually it is tangent to the plane along the axis which is tangent to the plane, so it will be 3/2 m r square, understand। now for increasing the angular velocity of your object by 10%, the kinetic energy has to increase by, अभी ये बड़ा अच्छा सवाल है, we know that
kinetic energy is given by half I omega square. Understand? So for increasing the angular velocity, so angular velocity or kinetic energy का relation दिया है, so we can write, assuming I as constant, we can write kinetic energy is directly proportional to omega square. So kinetic energy 1 upon kinetic energy 2 is equals to omega 1 upon omega 2 the whole square. Understand? अभी firstly angular velocity की omega, बाद में angular velocity increase होके it becomes omega plus 10 by 100. 10 by 100 क्यों लिखा? That is यहाँ पे 10% है, तो 10% का मीनिंग ही क्या होता है? 10 by 100. तो ओमेगा में 10% ऐड हो गया. तो फर्स्टली क्या थी ओमेगा, सेकंड क्या थी ओमेगा प्लस 10 by 100. अंडरस्टैंड? द होल स्क्वायर E1 upon E2. अभी ओमेगा प्लस 100 प्लस 10 क्या आएगा? 110 upon 100 ओमेगा, राइट? Omega omega will get cancelled. It will become 100 will shift it onto the numerator. So 100 upon 110. Understand? That will become the whole square. 0 will get cancelled. So बचा क्या? 10 by 11 बचा. इसका स्क्वायर क्या आएगा? 100 upon 120. Understand? So E1 upon E2 की वैल्यू हमें क्या मिली? 100 upon 121 में. अभी उन्होंने क्या बोला है? द एनर्जी इंक्रीज्ड, द एनर्जी हैज टू बी इंक्रीज्ड बाय. सो पहले जो एनर्जी थी वो इवन थी, बाद में एनर्जी कुछ तो बढ़ेगी, सो हम उससे एक्स परसेंटेज कंसिडर कर लेते हैं. 100 अपॉन 121, सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. 121 E1 इज इक्वल टू 100 इनटू E2 प्लस एक्स परसेंटेज. सो 121 E1 इज इक्वल टू 100. Unfortunately, laptop discharge हो गया था. That is why video was stopped. We will resume our video again. जहाँ तक हम आए थे वहाँ से हम फिर से शुरू करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करना. नाउ यहाँ तक हम आए थे. सो 100 E2 प्लस 100 ऑफ एक्स परसेंटेज, राइट? अभी यहाँ पे हमें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी क्योंकि ये बोर्ड्स नहीं, ये सीईटी है. तो सीईटी के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा, थोड़ी शॉर्टकट कीज लगाने पड़ेंगे, थोड़ा अजम्पशन करना पड़ेगा. हाँ, 100 121 को हम कैसे लिख सकते हैं? 100 E1 प्लस 21 E1, राइट, इज इक्वल टू 100 E2 प्लस 100 ऑफ एक्स परसेंटेज, राइट? अगर हम x को E1 से कंपेयर करें, सो क्या हमें क्या मिलता है? 21 E1 is equal to 100 x percentage. So 21 upon 100 is equal to x. X becomes 21 percentage, right? So हमें x ही ढूंढना था. We get that x कितने परसेंटेज से बड़ा है? That is 21%. आपको समझ में आ ही गया होगा. Understand? Now next topic, that is next question. The torque acting is 2000 Newton with an angular acceleration of 2 radian per second square. The moment of inertia of the body is. अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि टॉर्क बोला है. What is torque? We know that torque is equals to I alpha with an angular acceleration of 2 radian per second. तो बहुत बहुत मतलब बहुत ही बेसिक का सवाल है, कोई भी मतलब दूसरी का अच्छा कर लेगा यार. टॉर्क की वैल्यू दी हुई है 2000, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, एंड अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है? That is 2 radian.
So 2000 upon 2 is equals to I. I की value will be 1000 kg meter square. Understand? See answer. Now, the next question is the moment of inertia of a disk. So unfortunately, perpendicular to its plane and passing through its center is mr square by 2. Its moment of inertia about a tangent to its plane will be. हमने अभी पढ़ा था कि mr square by 2 है. Its moment of inertia about a tangent perpendicular to its plane. Tangent perpendicular to its plane. ये बात तो mr square पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में. That is I is equals to IC plus ms square. So IC क्या है? What is IC? IC is mr square by 2. उन्होंने देख के रखा है that is mr square by 2 plus mr square we get mr square 3 mr square by 2. Understand? बहुत बेसिक सवाल था ये. Now calculate the moment of inertia of a thin uniform ring about an axis tangent to the ring and in the plane of the ring. If its moment of inertia about an axis passing through the center and perpendicular to the plane is 4 kg meter square. So ये MHT-Cet 2006 का सवाल है. What it is? About an axis tangent to the ring in a plane of the ring. So tangent का हमने पढ़ा था. Moment of inertia is equal to 3 by 2 mr square. बच्चे मुझे पता है कि थोड़ी हैंडराइटिंग गंदी आ रही है लेकिन समझने लायक तो है. 3 by 2 mr square. If its moment of inertia about an axis passing through center and perpendicular to plane is 4 kg meter square. So हमें ढूंढने क्या बोला है? Moment of inertia passing through center and perpendicular to plane. Passing through center and perpendicular to plane क्या है? Moment of inertia रिंग का mr square है. उसकी वैल्यू दे के रखी है 4. So mr square की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे 3 by 2 into 4. It will be 3 to the 6. 6 kg meter square will be the value. Understand? So आज का हमारा लास्ट सवाल है ये. If radius of solid sphere is doubled by keeping its mass constant, then okay. बढ़िया सवाल है यार. If radius of solid sphere is doubled, अभी हमें पता है कि moment of inertia of a solid sphere is given by 2 by 5 m square that is along the diameter. उन्होंने क्या बोला है? रेडियस अगर डबल कर दी जाए तो मास कांस्टेंट है तो इसलिए हम डायरेक्टली लिख सकते हैं I is directly proportional to r square. So we can write r1 upon r2 is equals to r1 square upon r2 square, right? r1 upon r2 is equals to, अभी पहले रेडियस थी r, बाद में डबल हो गई, so it will be 2r. The whole square, it will become 1 by 4. R will get cancelled. 1 by 2 का square 1 by 4. We get the value, that is answer is A. Understand? अभी हमारा वो RT वाला सवाल बाकी था. It is quite difficult to understand. मुझे भी थोड़ा वक्त लगा. So चलो करते हैं बच्चों. A thin uniform circular disk of mass m and radius r is rotating in a horizontal plane about an axis, passing through center and perpendicular to plane and angular velocity omega. Another disk of same mass
but half of the radius is gently placed over it coaxially. The angular speed of composite disk will be. अभी पहले हम यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉरी एंगुलर मोमेंटम की कंसेप्ट लगाएंगे. एंगुलर मोमेंटम से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे. अंडरस्टैंड? क्योंकि यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी भी देके रखे हैं. सो L is equals to I omega we know. उन्होंने डिस्क का बोला है that is passing through center and perpendicular to plane. We know that passing through center and perpendicular to plane, the moment of inertia is mr square by 2. We get that mr square by 2 omega and L. ओमेगा को अगर हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे that is L upon omega mr square by 2. ये एक वैल्यू आ गई. नाउ सेकंड हमारे पास है कि another disk of same mass but half the radius is gently placed over it. So वो composite disk बन गई. मतलब हमें पहले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और जो ऊपर से जो रखी है कोएक्सियली द डिस्क व्हिच इज कोएक्सियली प्लेस्ड ऑन दैट डिस्क, सो उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया देना पड़ेगा. इस दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें ऐड करना पड़ेगा. I is equals to पहले का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वी नो दैट हाफ mr स्क्वायर दैट इज पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन. अभी दूसरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? वो भी mr हाफ mr स्क्वायर है, लेकिन r जो है दैट इज रेडियस, इट इज हाफ. हियर इट इज मेंशन हाफ द रेडियस. सो हम रेडियस को हाफ कर देंगे. हाफ r the whole square. Now what will be the answer? Half mr square plus half m r square by 4. So it will become half mr square plus 1 by 8 mr square. So 8 plus 2 10, 10 by 16 mr square. It will become 5 by 8. 2 5 is 10, 2 is 16. It is 5 by 8 mr square. Understand? तो हमारा नेक्स्ट वन का जो आ गया दैट इज I 5 by 8 mr square. तो हमने यहाँ पे L by ओमेगा फाइंड किया था, तो यहाँ पे भी हम L by ओमेगा फाइंड कर दे. वी नो दैट L is equals to I ओमेगा. I की वैल्यू है 5 by 8 mr square ओमेगा L. सो L by ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई? 5 by 8 mr square. अंडरस्टैंड? तो उन्होंने यहाँ पे पूछा क्या है? द एंगुलर स्पीड ऑफ द कंपोजिट डिस्क विल बी. सो जो कंपोजिट डिस्क की जो एंगुलर स्पीड है उन्होंने वो पूछी है. नाउ वी नो दैट L is equals to I ओमेगा. अगर L अगर हमने कांस्टेंट अज्यूम कर लिया, सो वी नो दैट I1 ओमेगा 1 is equals to I2 ओमेगा 2. That is from the conservation of angular momentum. Conservation of angular momentum. Understand? अभी हमने I1 क्या फाइंड किया था? That is half mr square ओमेगा 1 into I2 क्या फाइंड किया था? 5 by 8 mr square ओमेगा 2. सॉरी ओमेगा 2 mr square will be cancel. 8 upon 10 आता है यहाँ पे. ओमेगा 1 is equals to omega 2. It will be 4 by 5 omega 1 is equals to omega 2. Understand? So omega 2 की वैल्यू क्या आ गई? 4 by 5 omega 1. तो यही हमें पूछा था 4 by 5 omega 1. तो बच्चों ये आईआईटी का सवाल था, इसलिए थोड़ा टफ था. आईआईटी का सवाल इजी तो नहीं हो सकते. सो क्वाइट टफ. आप ये सॉल्यूशन देख सकते हो. दिस इज सॉल्यूशन. दैट इज ओमेगा 2 is equal to 4 by 5 omega 1. तो आज के लिए इतना है बच्चों. हमने बहुत से सवाल 25 to 30 क्वेश्चन का सॉल्व किए. दैट इज ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ MHT-CET. हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगली वीडियो में. तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि 9th में को CET है एंड इस टॉपिक से ऑलमोस्ट 3 to 4 क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज है रोटेशनल डायनामिक्स को.
सो प्रैक्टिस रोटेशनल डायनामिक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और सैम्पल पेपर्स अपलोड कर दूंगा. You have to solve this and submit me